Good evening, traders, and welcome to the F&O Show with Bereez. Yesterday, in our evening time, US announced its inflation data, and it was positive. Inflation was reducing, and as a result, anyone who checked US indices or even European indices in the night, or even Asian futures, they were up 3%, 3.5%, 4%. SGX Nifty was I don't know where, and a lot of Twitter gurus posted that they are very heavily in call positions. They have long thousands of lots of Nifty futures and whatnot. And I think by I think 10:30 or 11, a lot of those gains were returned. I think US index did not close anything to write home about. In fact, I think it closed very close to half a percent gain or something. So flattish, given the kind of move that was expected. I'm pretty sure a lot of people who were carrying shorts must have had the scare of their lifetime, because if your index opens 2-3% up, your position goes in terrible loss if it's unprotected position. So none of that happened here. We did open gap up, no doubt, but that gap was not scary to say the least. I mean, what was the gap? 0.32 percentage. That's nothing really. That's a regular uh, Wednesday, so to speak. And 18,600 level that yesterday felt like Nifty might once again take a resistance. That did not happen. We opened gap up and we sustained above that level throughout the whole day. The movement range for Nifty throughout the day was not much, only about 64 points. Just a couple of places the movement was very sudden. So a few times Nifty did make candles of 20 rupees and 25 rupees and so on. So uh, a little not very scary day for option sellers. I for one did not trade because I've realized that the strategy that I'm using does not work very well on non-expiry days. So until I figure out a way to reduce my losses on non-expiry days, I will not be trading very actively on days other than Tuesdays and Fridays. I did take a system-based position, that is 920 straddle-ish position, a little later than 920 on, excuse me, 18700 straddle, because I think by 9:30 that was in the money, and call and put were of roughly same premium. I closed it around I think 1250, because by that time 0.5 percentage profit was achieved. I think 10-11 points of decay was captured. I think after that that straddle did not return any money. In fact, it one of the legs went in the money, and I think it is now trading at higher than what I sold it for. So I am testing strategies like this. Once I refine something, we will share it on this channel, because those are system based strategies. So these are the kind of strategies that can be potentially automated, and all the emotional things or psychological aspects of the trading do not come there. That's for my trades. Kshitij has also taken a trade in Nifty. So over to you, Kshitij. Hello guys. So after a very long time, my targets were achieved. Like I've been taking trades in option buying, but yeah, today finally I think the Nifty gods, as someone would say, did manage to give me what I was looking for. So in Nifty, if you see, you can keep a tighter stop loss. Matlab in terms of the volatility, as in Nifty options don't like move in respect to Bank Nifty options. They move, but if Bank Nifty option moves 100 rupees, I'm pretty sure they don't move as much as Bank. Like let's say 30-40 rupees, something. I'm giving approximate values there. Okay. So now coming to the setup that I saw, I was waiting, and then I saw this three candle setup. Again, it's a setup that we I would not really like to disclose, but again, we've hit 100 subscribers today, and I feel like giving something back to you guys. Okay, so this is again a drop based drop setup. Okay, and if you see, this is a basing candle, and for me, when a basing candle comes with a confluence of a previous support, which now, because this is broken down, now for me is a resistance. So for me it was simple, my bias was set. These are all intraday trades, okay, right? My bias on a longer uh, time frame is bullish, yeah, but on a 5 minute, because this is a 5 minute time frame, I went short. In fact, here itself, this retest.
and my targets were hit in the next two candles. It was a very quick trade. In fact, as soon as I took the trade, I never even saw any kind of red in my trade. And yeah, I got my 1:2, and I was out of the trade. That's the simple trade I took in a put. Obviously, when I say I did not take a call. I took a put here. Yeah, I took a 18,700 put. I went in the money, and yeah, yeah, that's it. That's the simple trade. Again, I have explained the setup that you guys can use. Yeah, again, just in fact, this coming week, I'm gonna make a series on how to use rally based rally or drop based drop or rally based drop or drop based rally. So yeah, might be confusing right now. It's simple, fancy terms. I will explain. I will give out the strategy soon to you guys in the coming weekend as you guys have showered your love by hitting that 100 sub mark. Yeah, yeah, Yes, it is a really big milestone, especially considering how slow the initial few days were. I think after our immediate friends and families subscribed to the yeah. channel for about 2 weeks, we did not have any significant growth. And then suddenly, one fine day, we hit 100 subscribers. So it's definitely a milestone and definitely something to uh, be proud of. But of course, that increases our responsibility as well, because now I think here on out, more and more people will watch our show and will use whatever we are saying in their own analysis as well. So it's definitely up to us to up our game when we talk about stock market here. As I would like to repeat the line I said in the previous show again. We would try to not give you guys good content, but true content. Yes, yes. I I think hope you there's no guys. shortage of good content really, Yeah, but yeah, there is yeah. a True that. very uh, ये तो बराबर है कंटेंट तो बहुत अच्छे है और हम वो यूट्यूबर्स नहीं है यूट्यूबर्स तो है ही नहीं हम वो ट्रेडर्स नहीं है जो ऐसा बोलेंगे हमारा ही चैनल देखो नहीं नहीं बहुत हम इनफैक्ट वी विल सून आल्सो टेल यू गाइस which channels are something where you should learn this from them surely we जहाँ से जो अच्छा सीखने मिलेगा हम बताएंगे hmm, yeah true, true. So should we quickly go over Bank Nifty, yeah what it has done as well? सो आज का बैंक निफ्टी का जो रेंज है ना, दैट इज मोर इन लाइन विथ व्हाट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शुड बी रिलेटेड बाय. सो निफ्टी का रेंज आई थिंक 60 रुपीज था, बैंक निफ्टी का रेंज 160 रुपीज है. सो बराबर 2.5 टाइम्स का रेंज आज बैंक निफ्टी ने बनाया है. सो बहुत दिन के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव इज इन इन लाइन विथ ईच अदर. yeah सो yeah अच्छा लगा देख के, कुछ तो सेंस बन रहा है फाइनली मार्केट्स का थोड़ा बहुत. बट या दोनों दोनों इंडाइसेस ने गैप अप करने के बाद अपना जो रेंज है वो होल्ड किया है. सो टुमारो आई थिंक ये रेंज के बाहर ही खुलेंगे और फिर ये रेंज में आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है. ऑफकोर्स कल एक्सपायरी है, सो बोल नहीं सकते. आज एक और फेड का कुछ तो है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है आई थिंक आज. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कुछ तो मार्केट रिएक्ट करेगा सुबह सुबह. और आई थिंक इन दैट स्पाइक ऑफ वोलेटिलिटी ऑप्शन सेलर्स को अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते. जो कर चाहिए होता है वो जनरली मार्केट में मिलता नहीं है, ऐसा बोलते हैं. ऐसा बोलते नहीं ऐसा होता है हाँ. सो एट द मनी स्ट्रैडल निफ्टी का है 65 + 50, सो रफली 115, राइट. हाँ, 115 रुपीज. अगर कल ये 100 के ऊपर खुलता है एट द मनी स्ट्रैडल तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि वो वोलेटिलिटी जो है वो थ्रू आउट द डे अच्छा प्रॉफिट देगा. अगर फर्स्ट कैंडल में ही पूरा वोलेटिलिटी चला जाता है बाय 920, if the at the money straddle is under 90, 85, 80, then it will be a little boring day क्योंकि प्रीमियम्स नहीं होंगे. बट या बहुत दिनों के बाद फ्राइडे को स्ट्रेडल इतना हाई प्राइस पे क्लोज हुआ हुआ मुझे दिख रहा है. सॉरी, वेनसडे को इतना हाई प्राइस पे क्लोज हुआ दिख रहा है. सो अच्छा है, कुछ तो ट्रेड करने मिलेगा. बैंक निफ्टी का भी स्ट्रेडल 250 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ है, 160 एंड 130, तो 290 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है. प्रीमियम्स तो डेफिनेटली मार्केट्स ने होल्ड किया है थैंक्स टू द फेड इवेंट. नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि कल का दिन कैसा जाता है. दैट इज फॉर द इंडाइसेस. हाँ, सरप्राइजिंगली अभी मैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का देख रहा था.
तो जो LTIM है उसका चार्ट हम लोग ने पहले भी देखा था. Could we go to LTIM once more? There. Let's go to daily. Let's not see the short term volatility as well. Yeah, so इतने बड़े फॉल के बाद अभी LTIM, it looks like LTIM is taking support वो नीचे के लेवल से. लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी के हिसाब से तो मार्केट अभी भी का बड़ा मूव प्राइस इन कर रहा है LTI में. फिर भी वोलेट प्रीमियम्स वगैरह को देखते हुए LTI में आई थिंक इट इज वर्थ टेकिंग अ पोजिशनल ट्रेड टुमारो. एक्चुअली आज ही लेना था लेकिन फेड के इवेंट में मुझे पोजीशंस, वो भी स्टॉक ऑप्शंस के पोजीशन तो बिल्कुल ही कैरी नहीं करनी. व्हाट इज द लेवल देयर? 42.7, 200 क्या हुआ? हाँ ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड है. In लिमिटेड fact, रिस्क, लिमिटेड. if you know what setup I'm talking about, if we get a retest here, why not? हाँ, दैट्स बेस्ट. Yeah, yeah, आई थिंक फिर तो कैश स्विंग में भी हो सकता है, फेंडो में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं. yeah, yeah. It's a proper range कैश. breakout. So हाँ. any retest of the range would be, again, यस. this is a BTST setup. So हाँ, I मैं don't वही बोलने वाला था. I don't think I'm pretty sure this supply is going to get tested. हाँ. और अभी हमारे व्यूअर्स बोलने वाले कि हम किधर भी चार्ट पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किधर भी कुछ भी ड्रॉ हाँ करके बोल हाँ रहे हैं सेटअप है. हाँ हाँ. पर ये आप देख लेना, मैं मेरे जोन्स और लाइंस डिलीट नहीं करता है. गंदार से क्या था वो डायलॉग गंदार तेरा? ड्रॉ योर लाइंस विथ क्रेयॉन, नहीं सॉरी, पेंसिल. क्रेयॉन्स, यस, नॉट विद क्रेयॉन. पेंसिल्स. हाँ या. तो हाँ, ये तो मेरे मेरे आप कोई भी आप जब भी अगर वंस वी गो लाइव और आप मुझे पूछोगे ये चार्ट डालो, और आपको उसमें अगर मैंने वो चार्ट पहले देखा रहेगा तो मेरे लेवल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे. सो आई डोंट चेंज माय लेवल्स. तो माय लेवल्स आर माय लेवल्स, नन ऑफ योर लेवल्स. अरे यार, अभी सब्सक्राइबर कम होने वाले. क्या मन नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आज ही 100 हुए. आई वो होप. हाँ. शॉर्ट लिव मत रहने देना. देख रहे स्टॉक की तरह फेक ब्रेकआउट दे दिया है. हाँ, बट पीपल हैव डन दैट विद सेलिब्रिटीज, बाय द वे. आई नो, वो, लाइव काउंट के हाँ, साथ कि करते हैं. 10 मिलियन सब्स का लाइव काउंट ऐसा मोमेंटरीली 10 मिलियन ब्रेक करते हैं और फिर सडनली सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होते यस यस यस. हैं. तो साइकोलॉजिकल लेवल से रेजिस्टेंस लेते हैं. ऑलवेज, सब जगह जो आप इधर, आपको इधर मिल रहा है और इधर, मतलब आप इधर कोई पैटर्न फाइंड कर रहे हो, तो बेसिकली ये पैटर्न इधर मिला नहीं है, ये आपके लाइफ से इधर आया है. इट्स हाँ. डिराइव्ड फ्रॉम योर लाइफ टू द मार्केट. मार्केट को यस. कोई लेना देना नहीं है आपका, क्या आपने जनरेट किया है पैटर्न. ठीक है, आज हम्म. और ज्ञान नहीं तो ये चलते रह हाँ. सकता है रैंट्स. बट हाँ, ट्रू, ट्रू, ये ट्रू. जोन याद रखना, ये हिट हुआ तो बोलना नहीं कि ऐसे रैंडम ड्रॉ हुआ था, और इधर से वापस इधर आया तो बोलना नहीं रैंडम हुआ था. इट्स द जोन्स आर 4570 टू 4550 लेवल्स. यस. यस. ये मैं भी अभी जस्ट ड्रॉ किया मेरे चार्ट में भी. हाँ. आई विल कीप एन आई ऑन दिस. कल एक्सपायरी है तो कितना मैं बाकी चार्ट्स देखूंगा पता नहीं, लेकिन फिर इट्स वर्थ कीपिंग ऑन दिस. Yeah. Again, so we have got less than a minute. So let's wrap it up. या. Yes, yes. So thanks for tuning in, guys. Thanks for tuning into F&O Show with Bereez. Links to all our socials are in the video's description. Join our Telegram channel, follow our Instagram page, and make sure you subscribe to this video. And thanks for letting us hit 100 subscriber landmark. Our next milestone is 1,000. Let's Yes, keep it at thousand, 1,000. thousand. Next, Yes. yeah, next milestone is 1,000 Let's subscribers. play next, guys, together. Yes, let's go 10x from here. Thanks for tuning in. Bye.